Hello. So let's begin with the next topic, that is simple and compound interest. This is in sequence with the previous two topics that we have discussed, that's percentage and profit loss. So going ahead with the topic, it's again one of the applications of percentage, and based on the formulas that we have discussed in percentage, we'll be deriving all the formulas related to simple and compound interest. Starting with the topic, simple and compound interest, the first question arises, what is interest? So basically what happens is कि जब किसी से पूछा जाता है इंटरेस्ट क्या होता है, general answers are कि it is the extra value earned with the actual money that you have borrowed, or it can be many of the students reply ये ब्याज होता है. Basically many of them reply कि there is an increment in the value of money, that's why we have to pay something extra along with the actual money that we have borrowed. So there are different answers to it, but just to understand the concept of interest, let me get to the basics of business. So in the previous topic, then when we were talking about profit and loss, we talked about business. Continuing with the same concept of business, like what happens when we are talking in terms of business, we are exchanging either a product or a service. So when we are talking in terms of exchange of products with currency, the authority also changes. When we are talking in terms of selling a service, the authority do not changes. Let me explain you with an example. Basically what happens कि like let's assume आज की डेट में आप एक कैब सर्विस यूज कर रहे हैं. You are going from Jaipur to Delhi using a cab, and you are paying 3,000 as the rent, as the fare for cab. So basically ये 3,000 रुपीज जो आपने पे किया है, इसके अगेंस्ट कैब का ओनरशिप आपके पास आ गया क्या? No, the ownership is still with the cab driver only, with the owner only. It's just like they are providing you a service, and for using that service you have to pay a money. तो यहाँ पे कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है, फिर भी आपको पे करना पड़ता है. दैट इज इन केस ऑफ बिजनेस रिलेटेड टू सर्विसेज. तो आप जब भी कोई सर्विस यूज करते हैं, देखिए बहुत सारी सर्विसेज जो आप डे टू डे लाइफ में, जैसे यू गो टू द सिनेमा हॉल, यू वॉच अ मूवी ओवर देयर, दैट्स अ सर्विस. You use cab services, you use flight to travel, you use trains to travel. ठीक है, ये सारी सर्विसेज हैं. आप कॉलेज में फीस देते हैं, यू आर पेइंग देम, दैट्स अगेन अ सर्विस, दे आर प्रोवाइडिंग यू एजुकेशन अगेंस्ट इट. तो ये जो सारी सर्विसेज हैं जिनका ट्रांजेक्शन होता है, वहां पे ट्रांसफर नहीं होता है, स्टिल दैट्स अ बिजनेस. सो जब इन सर्विसेज के अगेंस्ट पे करना पड़ता है, वैसे ही मनी इज ऑल्सो अ सर्विस. यू आर बोरोइंग माई मनी, यू आर यूजिंग इट, यू आर रिटर्निंग आफ्टर अ पीरियड. तो आपने जब मेरा मनी यूज किया है, उसके अगेंस्ट आपको एक चार्ज पे करना पड़ेगा. दैट चार्ज और दैट एक्स्ट्रा मनी इज नोन एज इंटरेस्ट. So basically, when we are talking in terms of interest, what happens is कि this is the extra money that you have to pay because you have used someone else's resources. Extra money that you have to pay along with the actual money that you have borrowed, or can be the other case. It is the extra money that you receive along with the actual money that you lend to someone. तो आपने किसी को उधार दिया है, उसमें आपको जो एक्स्ट्रा मनी मिलता है, या फिर आपने किसी से उधार लिया है और जो आपको एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ता है, that is known as interest. Coming to the basic terminologies related to interest, the first is P. Generally, when I ask upon कि P क्या होता है, student replies, sir, it sorry. Generally, when I ask upon कि P क्या होता है, student to reply, it is principal amount. To make it clear, principal and amount are two different quantities. They are not to be merged upon. उन दोनों को साथ में merge नहीं करना होता है. Principal अलग चीज है, amount अलग चीज है. Talking about P, P is principal. प्रिंसिपल क्या होता है? ये वो इनिशियल वैल्यू है जो या तो आपने बोरो किया है या आपने किसी को लेंड किया है. सो यहां से आपका पूरा ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रहा है. सो पी इज बेसिकली प्रिंसिपल विच इज द इनिशियल वैल्यू. द सेकेंड टर्म इज आर. आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है वो समझ लेते हैं. सो बेसिकली होता क्या है कि आपने जो मनी पे किसी को बोरो किया है या फिर किसी को लेंड किया है, उस पर एक परसेंटेज अमाउंट है जो आप चार्ज करने वाले हैं एनुअली और मंथली और एनीवे. ये जो परसेंटेज की वैल्यू में डिफाइन होता है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि आप कितना परसेंट उस पर चार्ज करना वाले या फिर ट्रांजेक्शन में कितना परसेंट चेंज आने वाला है. सो आर इज डिफाइनिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज द percentage change taking place in the initial value principle. Going ahead with the third term, that's T. T is the time period. It is the duration
for which the whole transaction is taking place. तो ये ट्रांजेक्शन कितने साल में या कितने मंथ्स में कंप्लीट होने वाला है, दैट इज नोन एज टी और बीइंग द टाइम पीरियड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन. नेक्स्ट टर्म आता है ए इज अमाउंट. Amount is the final value that you obtain on completion of the transaction. So let's assume आपने कुछ मनी बोरो किया था, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी जो एज ए इंटरेस्ट आपने पे किया, इन दोनों को ऐड करके जो टोटल वैल्यू आप रिटर्न करते हैं ऑन द कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन विच इज द फाइनल वैल्यू इज नोन एज अमाउंट. तो अमाउंट हो गया फाइनल वैल्यू विच इज ऑब्टेन्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन. द फिफ्थ टर्म इज आई. सॉरी, आई इज इंटरेस्ट. So interest क्या होता है बेसिकली? It is the difference value. Difference value as in between the initial and the final value. कि आपने इनिशियली कितना बोरो किया था, फाइनली कितना रिटर्न किया, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस वैल्यू आएगा, दैट डिफरेंस वैल्यू इज नोन एज इंटरेस्ट और इज डिनोटेड बाय आई. So let's assume a situation you are borrowing 10,000 from someone and at the time of returning you are returning 12,000. What is the interest being paid by you? The simple answer is 2,000. Now how we are calculating it? आपने 10,000 बोरो किया था, आपने 12,000 रिटर्न किया, एक्स्ट्रा कितना पे किया? 12,000 माइनस 10,000, दैट इज 2,000. राइट? ये 12,000 आपका अमाउंट है विच यू आर रिटर्निंग फाइनली, 10,000 आपका प्रिंसिपल है विच यू आर बोरोइंग इनिशियली. इंटरेस्ट हो गया डिफरेंस ऑफ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो आई होप दैट्स क्लियर कि इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है. फर्स्ट थिंग, पीआरटी ए और आई का बेसिक मतलब क्या होता है? Technologies. Can take a note, then we'll go ahead. Going ahead to the next slide. There are two ways of calculating interest. जब आपसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है तो उसके दो अलग अलग तरीके होते हैं. At times people are charging simple interest. At times it is compound interest. So let's try to figure out the basic. देखिए बचपन से ये चीजें आप पढ़ते हुए आ रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है. We just need to understand कि डिफरेंस क्या होता है. So let's assume a case कि आपने 10,000 बोरो किया at 10% per annum on simple interest. तो अब क्या होगा? फर्स्ट ईयर का जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट 10% ऑफ 10,000 व्हिच टर्न्स आउट टू बी 1,000. अगर सिंपल इंटरेस्ट का केस है, सेकंड ईयर के लिए अगेन यू विल कैलकुलेट 10% ऑफ 10,000. थर्ड ईयर अगेन 10% ऑफ 10,000. एवरी ईयर यू विल बी कैलकुलेटिंग इट टू बी 10% ऑफ 10,000 व्हिच इज गोइंग टू बी द सेम 1,000 every year. This is the case of simple interest when every year you are calculating your interest only on the principal value. Compound interest के केस में क्या होता है वो भी एक बेसिक ओवरव्यू दे देते हैं. So let's assume you borrowed the same 10,000 at 10% per annum, but this time it is on compound interest. So if it is on compound interest, what happens is कि आपने पहले साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, it turns out to be 10% of 10,000, which is 1,000. When you will be calculating interest for the second year, you will be calculating it on 10,000 that you have borrowed and 1,000 that is the interest. So 11,000 पे आप calculate करेंगे. When you will calculate 10%, you will calculate it to be 1,100. So third year के लिए you will be calculating it on 11,000, which is 12,100. So basically, when I'm talking in terms of compound interest, it keeps on increasing every year because rather than calculating it on the principal or the initial value, we're calculating it on the amount or the final value end of the previous year. Starting with the concept of simple interest SI, if I'll ask you to recall me the formula for calculating SI, that's quite a simple one. I hope all of you must be aware of. So SI का formula क्या होता है? Good enough. So that's P into R into T upon 100. बेसिक सा फॉर्मूला है. अब यहाँ पे जाके अपना रोल क्या है? अपने को ये डिराइव करना है. हाउ वी आर गेटिंग द फॉर्मूला, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. देखिए मैंने परसेंटेज में बोला था कि ये एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज होते हैं, एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस एंड ऑल, राइट? तो ये फॉर्मूला जो है वो अपन डिराइव करेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज होती है. लाइक सॉरी, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, अभी जो अपन ने एग्जांपल लिया, वी वर टॉकिंग अबाउट 10,000 बीइंग बोरोड एट 10% पर एनम. आपने मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताया था कि इट इज 1,000 फॉर द फर्स्ट ईयर. अब थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं 1,000 कैसे आया था. सो एक्चुअली व्हाट यू वर डूइंग इज, okay, just give me 1 second for that. Yes, you were calculating basically 10% of 10,000.
which turns out to be 1000. And that's how you were telling me the interest to be 1000 for the first year. इसी को अगर PR के टर्म्स में ले जाएं, so basically what you're doing is calculating R% of P. Sorry. So for the first year, your interest that you are calculating is basically R% of P. That is PR upon 100. Second year, again, it will be the same principle on which you'll be calculating the interest. That's again going to be PR upon 100 only. Right? Going ahead with the third year. For the third year, SI is again going to be PR upon 100 because it's the same for every year. Every time we are calculating it on the principal value only. The same pattern continues for the next T years. So when so when I'm being asked upon to calculate interest for T years all together at once, what I'll do is I'll add the interest for the first year, second year, third year, and for all years together. So it will be PR upon 100, PR upon 100 added T times. And when the same value is multiple times, rather than adding it, you can simply multiply it by T. भाई अगर आपको मैं बोलता हूँ कि 5 को 4 टाइम्स ऐड करो, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो आप इसको 4 टाइम्स ऐड करने की जगह 5 इंटू 4 20 आंसर दे देते हैं. तो अगर एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स ऐड करना है, मैं ऐड करने की जगह उसको टी से मैं get SI equal to PRT upon 100. That is the final formula for calculating simple interest. And I hope the derivation is clear to all. So you can take a note and then we can go ahead with it. So if this is clear, going ahead, there's a question on the screen which you have to solve. In case if the rate of interest is differential, that is differential rate of interest. So what happens in this case is, I'm giving you a question. What you are supposed to do is, you have to read the question, you have to pause the video, you have to solve the question, have to come up with your answers. I'll be getting you the answer, have to check it, whether it's correct or wrong. Even if it's correct or wrong, go through the solution. So the question is, if the principal is P, if the rate of interest is differential, matlab it is varying every year. It's R1% for the first 2 years and R2% for the next 3 years. You have to calculate SI. So what is being asked upon is calculation of SI. आपको interest calculate करके बताना है इस केस में. जब अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पहले 2 सालों के लिए R1% है, अगले 3 सालों के लिए R2%. What you're supposed to do is you have to pause the video right now. 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए. पॉज करने के बाद कंटिन्यू कीजिए और तब तक अपना आंसर निकाल लीजिए. गो अहेड. Okay, so I hope by now all of you must have solved the question. Let's come to the answer. Let me just tell you the answer first and then we'll go to the solution part. The answer should be, it should be P by 100. In the bracket में it's 2R1 plus 3R2. और हो सकता है किसी ने इतना सॉल्व ना किया हो, पहले ही फर्स्ट स्टेप पे छोड़ दिया. आंसर्स आर करेक्ट. फाइनली इस फॉर्म में आप ला सकते हैं. So for all those who have got the correct answer and who haven't got the correct answer, let's try to figure it out कि आंसर आ कैसे रहे. तो देखिए, इसको कहीं पे भी अपन अगर रटने की कोशिश करेंगे, we'll try to mug up the things. It's quite complicated to get the answers. अपन समझते हैं कि पहले साल का इंटरेस्ट मेरे को दे रखा है R1%, और ये R1% किसका कैलकुलेट किया जाएगा? P का. So if I'll ask you just the simple interest for the first year, that's going to be PR1 upon 100. Say yes or no. I hope that's clear. It's PR1 upon 100 for the first year. Second year, the rate of interest was again the same. So it's again PR1 upon 100. Third year, the rate of interest changed and it turned out to be R2%. So for calculating interest for the third year, it's going to be PR2 upon 100. Fourth year, same rate of interest R2. So it's again going to be PR2 upon 100. Fifth year, again the same rate of interest R2. So it's going to be PR2 upon 100. When we are being asked upon to calculate the total simple interest of 5 years, I'll add the 5 values. So I'll have PR1 upon 100 plus PR1 upon 100 plus PR2 upon 100.
Taking P by 100 common, I'll have 2R1 plus 3R2 in the bracket part. So that is my final answer and it's the correct answer. If this is clear, you can calculate simple interest in any of the given cases, even if it's case of differential or varying rate of interest. I hope that's clear. Going ahead, again, one more question on the screen, and I hope you know the procedure. You will pause the video, you'll solve the question, you'll get back to the answers, we'll check out the answers, and we'll go ahead. So the question is on the screen. Try to get me the answer at the earliest possible. A sum of money becomes 7 times of itself in 3 years. In how many years will it be 49 times of itself on SI? You can pause the video for 2 minutes, can calculate your answer, and can come back and resume the video. Go ahead. Okay, so I hope you must have paused the video in between. You must have solved it. You must have got the answer as well. मैं बता देता हूँ, देखिए इसके दो मोस्ट प्रोबेबल आंसर, जो सबसे ज्यादा प्रोबेबल आंसर होता है, दैट इज 21 ईयर. कई बच्चे इसका आंसर 6 ईयर्स भी निकाल के देते हैं. टू योर सरप्राइज, बोथ द आंसर्स आर रॉन्ग. So all those who have got the answer as 21 years or 6 years, I am so sorry, but the answer is wrong. We need to figure it out कि सही आंसर क्या है. In case if someone of you might have got the correct answer, let me just confirm it. The correct answer is 24 years. Now the motive is how we are getting the answer. वो समझना कोशिश करते हैं उसको आंसर आ कैसे रहे. Let me remove this. ठीक है, going ahead. देखो क्या दे रखा है. A sum of money becomes 7 times of itself in 3 years. प्रिंसिपल दे रखा है क्या आपको? आई गेस नो. तो अज्यूम करना है. मैं 100 रुपीज ले लेता हूं. परसेंटेज में मैंने बताया था जब भी अज्यूम करना पड़ेगा 100 लूंगा, इजी रहेगा. सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग द प्रिंसिपल टू बी 100 इन द फर्स्ट केस. इट बिकम्स 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ. मतलब अमाउंट हो गया इसका 7 टाइम्स, दैट इज गोइंग टू बी 700 in a duration of 3 years. Rate not given to you. What I'll do is I'll calculate the interest and it turns out to be 600 because मैंने 100 रुपीज जो इन्वेस्ट किया था प्रिंसिपल की तरह, उसका अमाउंट मेरे को 700 मिल रहा है. एंड इंटरेस्ट इज द डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट. यू मस्ट रिमेंबर दैट, राइट? सो इंटरेस्ट आ गया आपका 600. बट सिंस इट्स अ केस ऑफ एसआई, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट आई डू इज एसआई इक्वल टू पी. आर मुझे पता नहीं था, टी अपॉन 100. ये 100 से मैंने 100 कैंसिल कर दिया. सॉरी, आर आ गया 600 अपॉन 3 विच टर्न्स आउट टू बी 200%. तो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू निकाल लिया फ्रॉम द फर्स्ट केस. गोइंग एट टू द सेकंड केस, दिस टाइम अमाउंट इज बिकमिंग 49 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ. मतलब 100 रुपए का मेरा हो गया 4900. रेट अभी मैंने निकाली थी 200%. टाइम अब मुझे नहीं पता. और इंटरेस्ट, एनीवन, इंटरेस्ट कितना हो गया? एनीवन? करेक्ट. So that's going to be 4800. Again applying the same formula. SI equal to P R T upon 100. ये कैंसिल आउट हो गया. T आ गया 4800 upon 200. कैंसिल करेंगे, you'll get 24 years as the correct answer. So I hope that's clear to all. सबको समझ में आ गया. जो मिस्टेक कर रहे थे वो 21 ईयर्स वाली, वो भी समझा देता हूं. होता क्या है, आपने बोला यार 1 से 7 हो रहा है 3 सालों में, तो 1 से 49 कितने में होगा? इंटू 7 कर दो इस वाली इक्वेशन को, तो 21 ईयर्स हो गया. ये लीनियर या फिर यूनिटरी मेथड जो आप लगा रहे हैं वो इस केस में गलत है, बिकॉज आप अमाउंट पे लगा रहे हैं, आपको इंटरेस्ट पे लगाना था. इज दैट क्लियर? So I hope that's clear. The correct answer is 24 years. There is an alternate method available to it. We'll just discuss that as well. Sorry. So what is happening is we're converting this P into 7P. तो आप मुझे केवल इतना सा बताइए, आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है?
If your P is getting converted into 7P, आपको interest कितना मिल रहा है? Can I say 6P? And in how many years? 3 years. So 1P कितने years में मिलेगा? Simply 3 by 6. That is 1 by 2 years. अब सेकंड केस पे चलते हैं. आप इस P को कन्वर्ट करना चाहते हैं 49P में, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 48P. और आपको 1P के लिए 1 by 2 years लगते थे, 48P के लिए 48 into 1 by 2. That turns out to be 24 years. That could have been an alternate solution to the same question. This can again one of the ways which you could have applied. यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, प्रिंसिपल पे या फिर अमाउंट पे नहीं कर रहा हूं. Is that clear, everyone? So, basic note point which we can derive out of the entire question or the conclusion of the question is, in case of simple interest, always operate on interest. कभी भी amount या principal पे operate नहीं करना है. You are always supposed to operate on the interest part. I hope that's clear to all. So with this, we are done with the first session of SICI, where we have completed the entire portion related to simple interest. We'll have another session which is related to compound interest, and by the end of that session, we'll be done with the topic. SI अपना complete हो चुका है. By the end of next topic, by the end of next session, अपना CI भी complete हो जाएगा, and we'll wind up the topic at basic level, right? So as of now, what you are supposed to do is, I'll forward you the sheets. You'll find your sheets on the app. You have to solve the questions. I can just mention the question here as well. So for sheet number 1, you have to solve question number 1 to 5. For sheet number 2, you have to solve question number 1 to 6. For sheet number 3, you have to solve question number 1 to 5. This is the part of homework that you have to complete before the next session. We'll continue with CI in the next session and we'll wind up the topic. Thank you.